So dear students, now we are doing question number 9. Let's read the statement. Bat and Ball are the partners sharing profits in the ratio of 2:3 with the capitals of rupees 1,20,000 and rupees 60,000 respectively. Okay, this is the capital. This contributed by Bat and this contributed by Ball. On October 1st, 2018, Bat and Ball gave a loan of rupees 2,40,000 and rupees 1,20,000 respectively. When loan is given on October 1st, 2018, Bat rupees 2,40,000 and Ball rupees 1,20,000. Bat had allowed a firm to use his property. Now this is the new point. Bat had allowed the firm to use his property for the business for a monthly rent of rupees 5,000. बैट की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है जो उसने किसको दे दी, बिज़नेस को, फार्म को दे दी, और कितने रेंट पे दी है, 5,000 पर मंथ. बिज़नेस को अगर कोई बिल्डिंग चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो आउटसाइडर से भी रेंट पे ले सकता था. आउटसाइडर्स भी उससे क्या चार्ज करते हैं, रेंट चार्ज करते हैं. और पार्टनर ने भी क्या किया है, 5,000 मंथली रेंट चार्ज किया है. तो ये रेंट भी फार्म के लिए क्या है, चार्ज है, एक्सपेंस है. चाहे फर्म को प्रॉफिट्स हैं या नहीं है, ये रेंट पेबल टू पार्टनर होगा. एंड द लोन फॉर द ईयर एंडेड The loss for the year ended 31st March 2019 before rent and interest amounted to rupees 9,000. फर्म को क्या हो गया है, incurred a loss of rupees 9,000. और ये जो 9,000 का लॉस है अभी हमने चार्ज नहीं किया है, ना तो रेंट और ना इंटरेस्ट ऑन लोन. तो इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट आर द चार्ज टू फर्म. चाहे फर्म को प्रॉफिट्स हैं, नहीं हैं, लॉसेस हैं, ये तो फर्म को पे करने पड़ेंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. So first this we have to prepare profit and loss account. Okay, in profit and loss account, in this case loss is given, so loss will be transferred to debit side to net loss rupees 9,000. Okay, to interest on loan is to be charged. Interest on loan is to be charged. Again, rate is not given, so rate will be 6% per annum. This is the working note. Bat has given a loan of rupees 2,40,000. 6% for 6 months, it will be rupees 7,200, and Ball will be rupees 3,600. So this and this total interest on loan would be 10,800. And again, rent is also payable. To rent payable, it is also an expense and will be debited to profit and loss account. 5,000 per month for 12 months, it will be 60,000. So in this case, the firm is suffering a total loss 9,000 plus this interest on loan plus this rent. The total loss will be 79,800. 79,800 loss will be transferred to profit and loss appropriation account. So now making profit and loss appropriation account, debit side loss will be transferred to profit and loss account. This is the loss 79,800 and it is distributed to the partners. Debit side total, सेम टोटल ऑन क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड कोई भी अमाउंट नहीं था, तो टोटल 79,800 लॉस विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:3. दैट विल बी बैट रुपीज़ 31,920 एंड बॉल 47,880. So you will have to do the questions from question number 6 to question number 9.